Welcome friends, welcome to the lecture series of Basic Electrical Engineering. So in today's lecture we are going to discuss about Q factor, that is called as an quality factor. ये quality factor क्या है, बट उसको हम समझने के लिए रेफरेंस लेंगे RLC सीरीज सर्किट का जो उसके साथ एसोसिएटेड है. सो लेट्स स्टार्ट. So my Q factor, that is called also known as क्वालिटी फैक्टर. ठीक है, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो क्वालिटी फैक्टर इज रिफर्ड टू समवॉट द RLC सीरीज सर्किट. RLC सीरीज सर्किट के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज इट इज गिवन बाय द वोल्टेज मैग्निफिकेशन. वोल्टेज का मैग्निफिकेशन अगर हम करना चाहें देन इट इज डन बाय दिस क्यू फैक्टर एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन. जो हमने रेजोनेंस कंडीशन जो अंडरस्टैंड की थी उस कंडीशन के ऊपर इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. वोल्टेज मैग्निफिकेशन जो है दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द रेजोनेंस कंडीशन. तो हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि मेरा मैक्सिमम करंट कब होगा? एट द टाइम ऑफ द रेजोनेंस. क्योंकि यहाँ पे अगर हम Z ले रहे थे तो Z इज नथिंग बट द R ओनली बिकॉज XL एंड XC बोथ आर इक्वल. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता चली देन यू कैन गो टू द RLC सीरीज सर्किट रेजोनेंस सीरीज सर्किट लेक्चर and refer to that. So this is my current, and for the voltage V is equals to Im multiplied by the R. So voltage across inductor or capacitor is given by Vc, or we can say the Vc or VL. So Vc के लिए हम ये चीज़ लिख सकते हैं Im into XL, और for the Vc we can write Im into XC also, क्योंकि it can be both the values. अगर आप XL और XC रेजोनेंस के टाइम की बात कर रहे हैं देन बोथ दी वैल्यूज आर इक्वल. तो यहाँ पे if I want to define my Q factor, then Q factor is equals to voltage magnification तो है ही, but voltage across L और C दोनों में से किसी एक के अक्रॉस का वोल्टेज अगर हम L को ले रहे हैं देन इट इज ओके, एंड इफ वी आर टेकिंग फॉर द कैपेसिटर देन इट इज ऑल्सो ओके. सो डिवाइडेड बाय द अप्लाइड वोल्टेज. सो यहाँ पे हम दोनों कंडीशंस एक साथ देखेंगे. इट कैन बी VL डिवाइडेड बाय V and it can be Vc divided by V. So VL is ultimately Im multiplied by the XL divided by क्या हो जाएगा Im multiplied by R, or we can say Im multiplied by XC divided by Im into R. Okay, so XL divided by R or XC divided by R. This can be the scenario. So for the 2 pi fr we can write this thing, क्योंकि XL क्या है ultimately omega L. So omega is my 2 pi fr, 2 pi fr divided by R, or we can write it as an 2 pi fr into C. यहाँ पे हम fr क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि it is at the time when the resonant condition is there. So that is why we are considering the resonance frequency. So 2 pi FRC, okay, it can be like this way. Pardon me for this. It is written as a 2 pi FR into C. Okay, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 divided by omega C. तो omega C यहाँ पे आएगा, so multiplied by the R. So this is the complete thing. Now you can see this is my Q factor. तो
इसके लिए अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें देन इक्वल टू ओमेगा ए आर इंटू एल डिवाइडेड बाई आर, और वी कैन राइट इट लाइक 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा आर सी आर. दिस इज द थिंग. बट नाउ एट रेजोनेंस कंडीशंस पे क्या हो जाएगा, बट एट रेजोनेंस ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 divided by L into C. So omega r is equals to 1 divided by under root LC. So this is my particular frequency, or we can say the resonance condition. And for the Q factor, we can write this term like this way, is equals to 1 upon under root L into C multiplied by L by R, or we can write this thing in this way, under root LC divided by C into R. Okay, दोनों के लिए अगर हम सिंप्लीफाई करें then the condition will be like this way, 1 by R into under root L upon C. Or for this condition we can write this thing as 1 by R into L by C, and the total Q factor will be 1 by R अंडर रूट एल बाई सी. तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों चीज़ों के अंदर अगर हमने एक्स एल का केस देखा और एक्स सी का केस देखा, दोनों के अंदर द क्यू फैक्टर विल बी रिमेनिंग दी सेम. सो दैट्स हाउ द क्वालिटी फैक्टर कैन बी डिफाइंड. नाउ क्वालिटी फैक्टर एंड फॉर द पर्टिकुलर RLC series circuit, we can represent that thing in the graphical form like this way. So for the resonance condition it will be like this way. Okay, यहाँ पे it will be the resonance condition over here, जहाँ पे हम FR लिख रहे हैं यहाँ पे. So this is my frequency and this will be the maximum current. Now for the reverse condition it will be like this way. See, this will be the reverse condition for the particular values. So that's how the graphical representation can be seen. And as you can see, this is called as a resonance condition for the particular this point. This graph which I have shown with the dotted line, that is Z, and the graph at which this thing is appearing, that is called as an I point at particular this value. Okay, so I hope all of you must be clear with the idea. So that is how the complete graphical representation can be done for the RLC series circuit. So same things can be used for the parallel circuit. अगर आप देखना चाहें that how can a parallel circuit will perform, then it is already in the it is in the book, and you need to just go through all the factors that we have earlier discussed for the RLC series circuit. Okay, जो हमने RLC series circuit के लिए जो भी हमने factors यहाँ तक देखे हैं, वो सारे factors you can find out for the parallel condition. So parallel condition will be now what? Now अभी तक हमने जो देखा था that is the series connection. Now for the parallel you can take one resistor, one inductor like this way, and a capacitor will be connected over here, and a alternating supply will be connected over here. So now for this condition you need to find out all these parameters at your own and try to solve. It is already given into the book, and you can check these things from the book if you are not getting the proper idea. Okay, so that's all for the video lecture. I hope all of you gain some of the knowledge from this video, and if you gain some of the knowledge from this video, then you should like and share the video and also subscribe to my channel. Thank you for watching the video.